Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we have to discuss the responsibilities of leadership in detail. You know, there are certain responsibilities enlisted here, like leadership and climate, programming, school organization and staffing, professional development, staff supervision and evaluation, student control and supervision, student evaluation and reporting, communication and public relations, budgeting and buying, healthy safety plant supervision. So all of these responsibilities in detail, I would like to discuss here with you. First of all, the first component, that is the leadership and climate. In this context, you know, this is a continually endeavor to improve the operating effectiveness of the school, keep informed of current practices and techniques relating to school programs, teaching and administration by attending meetings and professional development conferences and reading professional materials. When not involved in teaching duties, to devote as much time as possible to the supervision of the school, observing methods of instruction and endeavoring to improve the efficiency of the staff and the school in general, suggest appropriate changes and ensure adherence to approved policies, practices, and procedures within his area of responsibility. So, in this context, when I am talking about the leadership and climate, it is the responsibility of the school leadership, the principal, to create a climate conducive to learning where he is making his efforts to improve the efficiency of the staff and school in general, and providing the approval of the policies and practices and procedures within his or her jurisdiction so as to uh, run the rules of business of school smoothly. Second component is programming. In this facet, principal is coordinating and fostering the development of programs within the school to best meet the needs and interests of the students. He assists the teaching staff in the development, implementation, modifications, and selection of curriculum materials, develop and support a high degree of student morale through curricular and extracurricular activities and services, and coordinate the participation of all members of teaching staff in the extracurricular program. You know, when we say the programming, it means whole school development, whole the program from academic to management, results, discipline, curricular activities, extracurricular activities, and staffing, reporting, directing, all things, all type of the programs. Third component is school organization and staffing. In this area, principal participate with the school division office in the selection of professional, clerical, and support staff. यहाँ पे प्रोफेशनल में टीचर्स भी आएंगे और प्रोफेशनल में मैनेजरियल स्टाफ भी आएगा. Be responsible for the preparation of timetable, class lists, and schedules.
hold regular staff meetings for the purpose of discussing educational and administrative matters, be responsible for the proper registration and transfer of students in the school, and for the maintenance of up-to-date student cumulative records. He works with the staff, take the decision for rich HR practices in the organization. Therefore, he do the best good stuffing and make administrative decisions as well. Maintain or direct the maintenance of other records and files and the preparation and submission of reports as required. Establish appropriate procedures for the control of all school textbooks, materials, and equipment. Have authority over faculty of education students accepted at his or her school. Where there is no vice principal, designate a member of the staff, teaching staff of the school to assume the duties and responsibilities of the principal in the principal's absence and inform the staff of the person designated. It is not understood that in the absence of the principal who will work as principal, it is needed to be notified and disseminated among all of the teachers and the other staff. They all should be aware about this uh, tentative arrangement. Moreover, he is also responsible to designate a person as a day teacher or day master or a duty officer of the day to make it convenient for all of the uh, teachers and the senior teachers to learn how to govern and how to run the school so as to make them able at the time of their promotion. They must be equipped with the ability and the skill how to run a school independently. I would like to share an example of the banks over here. You know, in any of the bank, other than manager, जितना भी उनका स्टाफ होता है वो शफलिंग पे रहता है. आप देख रहे हो अगर कोई कैशियर है 2 महीने तो अगले 2 महीने वो कोई चेक क्लियरेंस पे लगा हुआ है, अगले 2 महीने कोई और काम कर रहा है. तो सारी वर्किंग जो बैंक की है वो हर बंदा बारी बारी 2-3 साल में हर काम करके सीख जाता है और उसे इंडिपेंडेंट अगर बैंक चलाना हो या किसी की छुट्टी की सूरत में दूसरे का काम करना हो तो मसाइल पैदा नहीं होते. तो इसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं स्टाइल को. इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी ऑफ द पीपल और एब्सेंस ऑफ द एनी ऑफ द पीपल जो है वो इफेक्ट नहीं करती वर्किंग पे और एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है. नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. It's again the responsibility of the principal to promote the professional and academic growth of his staff through staff meetings, in-service training, and personal contact. Take an active role in the selection, planning, and implementation of professional development activities for the staff in cooperation with the superintendent's office and division's professional development committee. As far as the professional development is concerned, it is done through the workshops, the seminars, the participation in different refresher courses, trainings,
and all of the activities that promote professionally and make much skillful the employees of any of the organization. Staff supervision and evaluation. As building administrator, the principal is responsible for the daily supervision of the school, its students, facilitators, professional and support staff, volunteers, and personnel from outside agencies. Outside agencies means here the relevant departments from where the people are authorized to come into school, visit, examine, provide the input, and share their ideas. See that every teacher shall be on duty in the school at least 10 minutes before the opening of the forenoon session and at least 5 minutes before the opening afternoon session. तो ये इतने मिनट्स अर्लियर रहना चाहिए, बाद में जो लेट इंतज़ार करते हैं वो ठीक तरीकाकार नहीं है. और देयर आर द टू सेशंस, फोरनून सेशन जो रिसेस से पहले का है और आफ्टरनून जो है वो रिसेस के बाद का है. Principal shall evaluate the effectiveness of each member of the staff in accordance with the establishment plan and shall forward written reports to the superintendent. Principal should be is responsible for the development and conduct of an orientation program for all teachers new to his staff. No doubt, the novel people are required to be introduced fully with the existing staff so as to make uh, easy for both of the sides to lessen the any hesitation. Student control and supervision. Principal establish a climate in which students can develop self-discipline to have disciplinary authority over each student while on school premises, while going to and from school, while riding on the school buses, and while taking part in authorized school activities. He is also have authority over activities sponsored and conducted by the student organization of his school. So all of the activities other than the class teaching, rather it is annual program, annual sports, annual dinner, musical night, charitable show, kirat naat context, or bathbazi, or any of the other event, any fundraising move, whatever the activities the students are authorized to conduct inside the school, they are bound to report the principal, and the principal is responsible to look into the things कि वो कहीं कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट तो नहीं, एथिकली ठीक हैं, एथिकल स्टैंस उनका कैसा है, उससे लर्निंग के मौके कितने हैं स्टूडेंट्स के लिए, कहीं उसमें उनके कोई अगेंस्ट तो चीज़ें नहीं जाती, हर्ट तो नहीं होंगे, किसी को नुकसान तो नहीं होगा, फिर क्या बच्चे पेरेंट्स से पूछ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें उनका परमिशन लेटर साथ होना चाहिए, और उनको पिक एंड ड्रॉप और उनकी सिक्योरिटी और ये तमाम मसाइल जो हैं इनको देखने के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है. ही शुड बी in contact with all these matters and depute certain teachers to the students to look all these things. Another component covered by the principal, for which the principal is responsible, that is ये रोकना जरा इसको, student evaluation.
and reporting. To familiarize himself with the student evaluation and reporting is also totally the responsibility of principal. He should familiarize himself with the general people progress and to assist in its improvement. He should coordinate or direct the evaluation of the student progress and achievement and the provision of regular reports to the parents as required by the board policy. Here, board policy mean the board that is running that school. It is about the uh, private sector. But when we talk about the public sector, it means that as per the policy of the government, there might be some city district board, the city district governments. So whatever the type of governance is there under which the schools are being run, according to their policies, the principal is responsible to well aware about the policies and objectives of the government, of the organizing bodies, and accordingly, he should be coordinate and make progress reports, achievements, and in contact with the parents regarding student evaluation and their reporting. Communication and public relations. This is very vast field, and principal is responsible to maintain the communications with parents or guardians regarding the total school program, student achievement, and their placement and their behavior. Here, the placement is their promotion from one step to another step, and the placement in the sections and their placement in the categories of the students. He is also responsible to inform the parents on the school activities through newsletters, information nights, parent-teacher conferences, through in now the digital era. He may use email, he may use some sort of uh, text message, WhatsApp groups are there. So all of the means possible for school and parents. ਉਹ ਪਿਆ ਰਵੀਆ ਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Moreover, budgeting and buying is a very crucial and important responsibility of the principal. He or she should carefully do all these things related to the finance. He is responsible for the administration of the instructional supplies, budget for school, and the safekeeping of materials that belong to the school or the school division. He is responsible to establish procedures for the purpose and receipt of materials and supplies necessary to support the instructional program. He is responsible to ensure that there is a system of accounting for monies from students. Monies का उसने वो कर दिया है जो उनकी फीसेज हैं, जो student activities, student fee, gifts or other funds belonging to the school or any student group within the school. Different type की collection होती है ना, fee collection है, funds collection है, sometime किसी खास प्रोग्राम के लिए अलग से एक कलेक्शन है, जैसे कि आप कह लें कि ईद मिलादुल नबी है या मुहर्रम के लिए सबील लगानी है या कोई पाकिस्तान डे पे कोई फंक्शन करना है, तो ये स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जो हैं वो अलग से भी इसमें कलेक्शन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. तो किसी किस्म की भी फंड रेजिंग या मनी कलेक्शन एक्टिविटी प्रिंसिपल के नॉलेज के बगैर, उसके नोटिस में आए बगैर नहीं होनी चाहिए. और नोटिस कैसे करना है उसने उसको राइट अप में लेके आना है. उसके बाकायदा एक कमेटी बनेगी. कमेटी जो है वो नोटिफाई होगी, प्रिंसिपल नोटिफाई करेगा फॉर दिस सर्टेन इवेंट दीज आर द पीपल
कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। कमेटी में बेसिकली मेजर दो बातें होती हैं, मेंबर्स के अलावा उसका एक कन्वीनियर होता है और एक उसका सेक्रेटरी होता है। और वहाँ जेडीज डिफाइन की जाती हैं कि इस कमेटी की जो है वो जनरल ड्यूटीज क्या क्या हैं, क्या इसकी ज्यूरिसडिक्शन है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, अब कमेटी जब मीटिंग करेगी तो उसका टोटली वो मिनटाइज होगा, हर डिसीजन जो लिए जाएंगे, जो बातें की जाएंगी, जो मेंबर होंगे, जो डिस्कशन होगी, थारोली उसको मिनटाइज किया जाएगा, लिखा जाता है। और ये मिनट्स जो हैं वो फिर सर्कुलेट किए जाते हैं मेंबर्स के दरमियान कि जी ये एजेंडा था, इस एजेंडे पे ये डिस्कशन हुई है, फलां लोगों ने ये कहा है, और फाइनली जो रेलेवेंट लोग हैं उनको मतलब यूनानिमस जो डिसीजंस हुए हैं वो ये हैं। अब इस पे काउंटर साइन करेगा प्रिंसिपल उस डिसीजन पे, तब जाके वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। और इसको बाकायदा उस कार्रवाई रजिस्टर होता है एक स्कूल के अंदर, उसके अंदर दर्ज किया जाएगा और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, रिकॉर्ड में रखा जाएगा, सील किया जाएगा उसको। इसी तरह बाइंग है, कोई चीज़ खरीदनी है तो वो स्कूल काउंसिल मौजूद है, स्कूल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट है ऑफिशियली और लीगली, और उसकी सारी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेड होती है। उस काउंसिल का जो सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल, चेयरमैन खुद प्रिंसिपल होता है और एक सीनियर टीचर जो है उसका सेक्रेटरी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिक्वेजिशन जमा करवाई जाती है, लोग कहते हैं जी इसकी एक मीटिंग होनी चाहिए, और वो सेक्रेटरी उसको नोटिफाई करता है और मीटिंग कंडक्ट करता है कन्वीनियर या चेयरमैन। तो लोगों की राय को अगेन नोट करके मिनटाइज करके साइन किए जाते हैं, फिर वो उसको लोगों को उसको दिया जाता है उससे मतलब। हेल्थ सेफ्टी एंड प्लांट सुपरविजन, principal is responsible to develop and foster a sense of pride and respect for school property so that the facility is an attractive place. He ensured that all responsible precautions are taken to safeguard the health and general well-being of his staff and people of his school. To this end, he shall see that pupils and staff are adequately trained to make effective and any plans necessary for their safety. He organized and supervised patrols where applicable. पेट्रोलिंग मीन लोग जो गश्त करें, देखें उनको। मेक रेडिली अवेलेबल फर्स्ट एड सप्लाईज एंड ट्रीटमेंट्स, तो इसके लिए एक सिस्टम होता है, एक तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है या यूनिट कोई डिस्पेंसर रखा जाता है, या कोई एक्सपर्ट टीचर जो मेडिकेशन के हवाले से एक्सपर्ट हो वो इन चीज़ों को रन करता है, और कोई मॉनिटर स्टूडेंट जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। और अदरवाइज प्रॉक्टर और चीफ प्रॉक्टर बनाए जाते हैं जो लुक आफ्टर करते हैं इस तरह की चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल पैराडामिक का इशू है और 15 जुलाई से लिमिटेड परमिशन मिल रही है यूनिवर्सिटी ओपन करने की कि आप पीएचडी के स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं जिन्होंने रिसर्च करनी है, और वो लोग भी आ जाएं जिन लोगों को कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, वो आके यूनिवर्सिटी लैब में काम कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल्स के अंदर भी स्टाफ कुछ आ सकता है जिन्होंने बुक्स तकसीम करनी थी, और इसी तरह क्लरिकल स्टाफ। तो एक कोई ज़िम्मेदार होना चाहिए, और वो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार प्रिंसिपल है जो चेक करे कि क्या जो लोग आए हैं, बुलाए गए हैं, वो एसओपीज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने हेल्थ एसओपीज़ या सेफ्टी प्लान को ऑप्ट नहीं किया तो उन्हें मना कर दे, रोक दे, और ये सेफ्टी मेजर्स लेने पर उन्हें उनका पाबंद करे। सो दिस इज द solely responsibility of the principal to make sure all these things. He can again depute any of the staff member for this purpose. Not necessarily he himself or herself should do all this. Multiple data sources. Towards the responsibilities of the principals, different data sources are available कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसे करनी है, और सिस्टम यूज मल्टीपल डाटा सोर्सेज to capture evidence of the principal meetings, each of the performance standards,
तो स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से सोर्सेज हैं जो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये एक अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल सेशन है। इसे हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन सिस्टम जो है वो यूज़ करता है मल्टीपल डाटा सोर्सेज। क्या करने के लिए? एविडेंस लेने के लिए। प्रिंसिपल्स की मीटिंग के जो नोट्स हैं वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी मैंने बताया कि डिफरेंट मीटिंगें मिनटाइज होनी चाहिए। सो इन दैट context these documents work better. So let me share with you in the next session